A major political showdown is brewing in Odisha's Nuapada Assembly constituency as both the BJP and Congress flex their political muscles ahead of the upcoming by-election. The Bharatiya Janata Party's candidate Jay Dholakia filed his nomination papers on Saturday, turning the day into a massive show of strength for the party. A huge rally marked Dholakia's journey to the nomination office, with thousands of supporters joining the grand procession. Addressing the gathering, Odisha BJP President Manmohan Samal said the people of Nuapada have made up their minds to bring the BJP to power in the by-election. He promised all-round development in the region under the party's double-engine government, from tackling unemployment and migration to boosting agriculture, irrigation and local industries. Meanwhile, the Congress too made its presence felt as its candidate Ghasiram Majhi filed his nomination papers. Accompanied by senior leaders including PCC President Bhakta Das, veteran leaders Suresh Rautrai and several MLAs, the Congress turned out in full force. Taking a dig at the BJP and BJD, Bhakta Das alleged that both parties are hand in glove. कार्यकर्ता उत्साहित अच्छा समस्ते एकाकार लगी समस्त लोक मन प्रस्तुत कर भारतीय जनता पार्टी को नुआपड़ा विधानसभा यशस्वी कर सामग्रिक विकास हूँ भारतीय जनता लक्ष्य केन्द्र आम सरकार अच्छी राज्यर सरकार अच्छी लोकंर अपेक्षा अच्छी जहाँ 75 वर्ष 78 वर्ष भितर जो अधूरा काम अच्छी मौलिक समस्या अच्छी ताकू समाधान करने आम प्रथम थर ओडिशा सरकार रही केन्द्र सरकार आमर अच्छी एवं डबल इंजिन सरकार ये सामग्रिक विकास कार्य को त्वरान्वित कर एवं नुआपड़ा विधानसभा जहाँ जहाँ मौलिक समस्या अच्छी एवं एठी कर्मनियुक्ति दादन समस्या कृषि समस्या एवं जलसेचन व्यवस्था कृषिभित्तिक शिल्प माछ चाष गोटे ओडिशा रे 1 नंबर हबार जो संभावना अच्छी माछ चाष तापई कौन कौन व्यवस्था कराई परिवो। बीजेडी से समय बीजेडी को बीजेपी फेवर करथिला बीजेडी को बीजेपी फेवर करथिला एबे बीजेपी को बीजेडी फेवर करूछि ए दुई जण एक आम संगे लड़ुछंती कांग्रेस 1 नंबर अच्छी बाकी दुईटा मिसिकी 2 नंबर 3 नंबर नहीं।